Hey guys, welcome to another video. So we recently have been inspired with our loads of quality data and decided that we should be making and talking a whole lot more about our testing and uske insight हमें क्या मिल रहे हैं. So this video is going to be about graphic cards. Now we're not going to be complaining about price या कुछ और, but we're going to be talking about 3 parameters on which we have seen and which graphic cards are best. So basically, by the end of this video, you're going to be see the best 3060, best 3070, and so on and so forth up till 3090. So yeah, stay tuned and watch till the end. So before we start the video and start talking about ये graphic card क्या अच्छा है, वो graphic card क्या अच्छा है, we are going to be kind of awarding it in 3 categories. Now category number 1 is going to be lowest temperature under load. Best graphic card, lowest temperature under load. That's category number 1. Category number 2, highest clock speed. Highest clock speed of that particular card in that chipset range. Number 2. And number 3, it's going to be GPU score, 3D Mark का GPU score. हाँ वही 3D Mark score, GPU score. ये 3 category हो गए. So let's start off. Let's start off our video with 3060. Now 3060 is an amazing card क्योंकि वो सस्ता भी है in comparison to all the other cards. थोड़ा सा सस्ता पड़ता है. तो हमने ये sample size लिया. Now the sample size we have is of over 1000 graphic cards. Now what we did was we averaged it out. Average लिया गया है इसमें. Now starting off with GPU temperature, lowest temperature under load on a 3060. Surprise, surprise! It's a 2-fan card which wins it. It's Inno3D X2, Twin X2. Now you may be wondering 2-fan का कार्ड क्यों जीत रहा है? 2-fan का कार्ड इसलिए जीत रहा है कि इसका क्लॉक स्पीड इनहेरेंटली कम रहेगा इन कंपैरिजन टू ऑल दी अदर 36 दे हैव, ताकि इसलिए दो फैन में वो कूलिंग हो रहा है. सो ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि Twin X2 जीत रहा है, लेकिन इट्स वर्थ मेंशनिंग दैट इट इज द लोएस्ट लोड टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है, 56 डिग्रीज इन फैक्ट. नेक्स्ट अप टॉकिंग अबाउट 3060 में हाईएस्ट क्लॉक स्पीड रिकॉर्डेड. Now that goes to Zotac 3060 AMP. Now AMP is their overclock versions of cards, so 2021 megahertz. Not a surprise. Actually, the highest clock speed we've recorded in a 3060 of all the 3060s we've tested. Now finally, 3060 में the highest 3D Mark score that we have recorded, 9103. And guess who gets it again? It's Zotac 3060 AMP. So no surprise there. Again, ये है एक overclocked card. So now that you know, let's just quickly run through all the other chipsets. The coolest running card in 3060 Ti is Zotac Twin Edge. Again a 2-fan card. इसका मतलब ये है कि lower clock speed वाले कार्ड 2 फैन में कूल भी हो जाते हैं और ठंडा भी चलते हैं. Also 3060 Ti chipset should not be making a lot of heat, 65 degrees only. Now आ जाते हैं clock speed के ऊपर. Clock speed पे हमने रिकॉर्ड किया है 2040 MHz on Gigabyte Eagle OC. Again OC मॉडल है, ऑफ कोर्स क्लॉक स्पीड ज़्यादा आने वाली है. नाउ मूविंग ऑन टू 3D Mark स्कोर. नाउ सरप्राइजिंगली हाई 3D Mark स्कोर GPU स्कोर फॉर दिस सीरीज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स 12,710. कीप इन माइंड दिस GPU स्कोर. इसको मिला है Gigabyte 3060 Ti मास्टर. फॉर दोज हु हैवंट सीन द कार्ड, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सप्लाई में रहा है, एक्चुअली फॉर अ 3060 Ti इट्स अ मैसिव कार्ड. सो देयर इज नो रियल सरप्राइज कि क्यों इसका 3D Mark स्कोर हाई है. It's actually a really high quality card and therefore it's expensive as well. Now moving ahead, 3070. Now 3070 is the card जो मतलब के mid to high end में से सबसे value for money card होना चाहिए, और actually है भी. If you see the scores, it slots in very perfectly for 2K gaming. So let's move on with 3070, coolest running card. It goes to Asus Tough Edition. Well made card है. Again, now this is running cooler also because it has lower clock speeds than all the other variants, but हाँ cool तो चल रहा है तो टेंशन नहीं है. Now that had been running on 62 degrees centigrade. Now 3070 में highest clock speed क्या रिकॉर्डेड थी? 3070 में highest clock speed रिकॉर्डेड थी Inno3D iChill X4. Now 4 फैन भी इसलिए दिए ताकि वो ठंडा कर पाए, और ऑफ कोर्स दिस इज एन ओवरक्लॉक वेरिएंट. Inno3D का मोस्ट ओवरक्लॉक वेरिएंट हमेशा X4 सीरीज का होता है, 4 फैन वाला. ऑफ कोर्स Inno3D के ये वर्जन काफ़ी अंडररेटेड है. काफ़ी लोग सोचते हैं कि Inno3D बहुत ही फुद्दू ब्रांड है, अच्छा नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा. इनको लिए एक ही फैक्ट बोलना चाहूँगा मैं कि Zotac और Inno3D एक ही कंपनी बनाता है. वो कंपनी का नाम है PC पार्टनर, और ये दोनों कार्ड एक ही कंपनी बनाता है. सो देयर इज नो रीज़न व्हाटसोएवर फॉर वन टू अज्यूम कि
इनो 3D अच्छा नहीं चलेगा और Zotac ज़्यादा अच्छा चलेगा, एक ही कंपनी बना रही है दोस्त। नाउ मूविंग अहेड, 3070 का सबसे बेस्ट 3D मार्क स्कोर किसका है? सबसे बेस्ट 3D मार्क स्कोर 13960 अगेन goes to Inno 3D IHL X4. Surprise, surprise, Inno 3D X4 is actually performing good in the 3070 category. Now let's move on very fast to 3070 Ti. Now 3070 Ti my coolest running card at 70 degrees comes in MSI Ventus 3X. Now by now you are seeing कि एक ट्रेंड सा चल रहा है, you are seeing the underclocked variants perform better on the temperature side of things. Yeah, this is actually really amazing insight कि बहुत लोग प्रेफर करते हैं नहीं हमें को ओवरक्लॉक वाला ही चाहिए, बट अंडरक्लॉक वेरिएंट्स जिनको ज़्यादा कूलिंग नहीं लगती है क्योंकि दे आर मेड टू रन ऑन लोअर क्लॉक, दे इनहेरेंटली रन कूलर, और हमारी टेस्टिंग से क्लियर पता चल रहा है। सो येस, फायदा हो रहा है टेस्टिंग का। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड, नाउ मूविंग अहेड, हाईएस्ट क्लॉक स्पीड ऑन अ 3070 Ti गोज टू द Asus Strix एडिशन, Asus Strix 3070 Ti। फाइनली स्ट्रिक्स आ गया। आई थिंक सम ऑफ अस वर वंडरिंग कि अब तक स्ट्रिक्स क्यों नहीं आ रहा है हमारे सारे टेस्टिंग में, बट हाँ आ ही गया। ओके, now this is interesting. Now the 3D Mark GPU score सबसे ज़्यादा 3070 Ti में आया है Supreme X का, MSI Supreme X। Actually वाइड builds में बहुत बढ़िया लगता है, we really like that card as well. So let's move ahead. सिर्फ 3 कैटेगरी बचे हुए हैं हमारे। Now going to the heavyweights, starting off with 3080, the coolest running 3080 that we have recorded is the Aorus Master. Now for all those who you have seen the 3080 Master, वो काफ़ी मैसिव सा कार्ड है और कूलिंग मैक्स कवर्ड कूलिंग वाले फंडे लेके आए हैं, तो नो डाउट ऑफ कोर्स। लेकिन जस्ट अ क्विक नोट, इट शुड हैव बीन द 3080 फ्रॉम MSI Seahawk, बट क्योंकि वो AIO वर्जन का कार्ड है, वी एक्सक्लूडेड इट फ्रॉम दिस लिस्ट। मूविंग इट टू क्लॉक स्पीड्स, 2085 मेगाहर्ट्ज पे Aorus Extreme जीत रहा है 3080s में। इवन ऑन द 3D मार्क स्कोर इट्स Aorus Extreme अगेन। मैसिव 4 स्लॉटर कार्ड है ये, इसका टोटल 3D मार्क GPU स्कोर 18,400 आ रहा है। नाउ कीप इन माइंड, रेगुलर 3080s का 3D मार्क स्कोर hovers between 17 to 18,000. Now this is well crossing 18,000, और हाँ 4 स्लॉट का कार्ड है, क्लॉक स्पीड भी ज़्यादा है, there is no reason it shouldn't be winning the 3D mark shootout. Now moving on to 3080 Ti, जो actually 3090 in disguise है। Now the 3090 in disguise, the 3080 Ti, उसका coolest running card is again the Asus Tough Edition, lower clock speed card. Now the next 2 categories is won by the same card, it's Zotac Amp Extreme Holo. Now the Amp Extreme series always has been almost one of the most higher clock cards whenever it releases. No wonder in 3080 Ti we are seeing a 20,200 3D mark score from it, and the max clock speed that we saw on it was 2025. So Amp Extreme Holo series of cards on the 3080 Ti range are actually winning the last 2 categories, that is clock speed and finally 3D mark score. Just a disclaimer that I want to put here, 3080 Ti's का sample size हमारे पास close to 50-60 ही है. We haven't tested more than 60 of 3080 Ti's, so we'll reserve our comment on this and will not say कि ये winner है. We're waiting for a lot of other SKUs to come in, तो ताकि हमारा comparison size अच्छा हो जाए. Almost हर brand का SKU मिला है, लेकिन हर SKU नहीं मिला है हमको. So that is why we're not going to be saying definitively कि 3080 Ti का comparison सही था. Just that disclaimer we wanted to put in. And finally 3090, all 3 categories, just one card is winning. सारे category, clock speed भी, 3D mark score भी और lowest running temperature भी. And that card is Asus 3090 Strix. Max load temperature 68 degrees averaged out and 1995 megahertz maximum clock speed and 20,200 hour 3D mark score. Now just one final disclaimer for this video. Now the temperatures that we are saying is when your room temperature is held at 23 degrees ambient. ये एक अच्छा सा डिस्क्लेमर होना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ यू मे गो लाइक मेरे पास भी 3090 स्ट्रिक्स है पर वो नहीं चल रहा 68 डिग्रीज पे. सो या ऐसे मत सोचो आप लोग. इट्स बिकॉज ये 23 डिग्रीज AC, सेंट्रल AC, फुल कूलिंग ओनली. सो येस, दैट वाज आवर लिस्ट. आई होप यू लाइक वॉचिंग द वीडियो. आई मीन ये छोटा भी हो सकता है. दिस वीडियो कुड हैव बीन वन एक्सेल शीट, but there's no fun in just showing an Excel sheet. So these are our winners in the so-called categories. We haven't tested that many AMD cards to actually comment on it. But one thing I can say, all AMD cards have higher clock speeds in excess of 2200 on most of the SKUs, 6800, 6800 XT, 6900 XT. So yeah, hope you like watching the video. In case you didn't know, we ship systems across the nation in over 100 plus cities. In case you want yourself a good system at good prices with the best service ever,
please get in touch on our social handles or on our toll-free number. We leave that in the description as well. So yes, thank you for watching. Like and share and subscribe. We're gonna revert back to mix.